इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। हमें रहजनों से गिरा नहीं, तेरी रहबरी का ख्याल है, तेरी रहबरी। माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं। माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, तू मेरा शौक तो देख, मेरा इंतजार तो। अपने किरदार में ईमानदारी और उदारता का लिबास रखता था। यूं ही नहीं, वो करोड़ों लोगों पर राज करता था। नमस्कार, आज का दिन भारत के लिए गहरी संवेदनाओं का दिन है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, अर्थशास्त्री और बेहतरीन नेता डॉक्टर मनमोहन सिंह का 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उनके निधन की खबरों ने पूरे देश को शोक में डाल दिया। डॉक्टर साहब को दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। इस खबर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत कई नेताओं ने अपनी श्रद्धांजलि दी। आइए जानते हैं उनके जीवन और योगदान की अनमोल झलक। 26 सितंबर 1932 को पंजाब के गांव में जन्मे डॉक्टर मनमोहन सिंह का जीवन संघर्ष और शिक्षा की मिसाल है। पंजाब विश्वविद्यालय से स्नातक और स्नातकोत्तर किया। कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड जैसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा हासिल की। मनमोहन सिंह की शिक्षा ने उन्हें न सिर्फ अर्थशास्त्र का विशेषज्ञ बनाया, बल्कि राजनीति में उनकी मजबूत नींव रखी। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपने करियर की शुरुआत एक अर्थशास्त्री के रूप में की। उनके करियर में कई बड़े मोड़ आए। मनमोहन सिंह ने 1976 से 1980 में भारतीय रिजर्व बैंक के डायरेक्टर और सन 1982 से 1936 में गवर्नर के रूप में काम किया। 1951 में नरसिम्हा राव की सरकार में आर्थिक उदारीकरण की नीति लागू करने में वित्त मंत्री बनके उनकी अहम भूमिका रही। 1951 का आर्थिक सुधार भारत के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री बने। उनका कार्यकाल उपलब्धियों और चुनौतियों से भरा रहा। आर्थिक प्रगति, ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, भारत अमेरिका परमाणु समझौता, विपक्ष की आलोचनाओं का सामना। उनकी विनम्रता और गंभीरता ने उन्हें एक अनोखा नेता बनाया। उनकी उपलब्धियों के साथ साथ उनके कार्यकाल में कुछ विवाद और आलोचनाएं भी देखने को मिली। मनमोहन सिंह के कार्यकाल में 2G स्पेक्ट्रम और कोयला आवंटन जैसी बड़े घोटाले हुए। इन परिस्थितियों के बावजूद मनमोहन सिंह ने देश की सेवा में अपनी निष्ठा नहीं छोड़ी। मनमोहन सिंह को न केवल भारत बल्कि विदेशों में भी सम्मानित किया गया। उन्हें सन 97 में भारत में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। जापान में 2014 में ऑर्डर ऑफ पोलोनिया और 2010 में सऊदी अरब में ऑर्डर ऑफ किंग अब्दुल अजीज से सम्मानित किया गया। डॉक्टर सिंह का योगदान केवल राजनीति तक सीमित नहीं था। उन्होंने विश्व मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को ऊंचा किया। मनमोहन सिंह ने अपने जीवन में जो शब्द कहे वो आज भी प्रेरणा देते हैं। आइए उनके आखिरी भाषण पर नजर डालते हैं। People say I was a silent prime minister. I think these volumes speak for themselves, and I don't want to boast about my goals or my achievements as the prime minister, but the events that took place are well described in these volumes, particularly the volume which deals with the Prime Minister speaks. I certainly would like to say that I was not the Prime Minister who was afraid of talking to the press. I met the press regularly, and on every foreign trip that I undertook, I had a press conference on return in the plane or immediately after landing. So there is a large number of those press conferences whose results are also described. And I remember very vividly in 2005 when I went to Washington, the National Press Club invited me to address. Our officials were nervous.
that I would not be able to manage the National Press Club, but that was a very successful conference, and that conference, its verbatim record is published in these volumes. That will give you an idea of what I was able to achieve in dealing with ladies and gentlemen of the press. डॉक्टर सिंह ने अपने आखिरी भाषण में कहा था, मैं ये नहीं मानता कि मैं एक कमजोर प्रधानमंत्री रहा हूं, इतिहास मेरे प्रति अधिक दयालु होगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह की ये पंक्तियां उनकी शख्सियत का आईना है। श्रद्धांजलि डॉक्टर मनमोहन सिंह का जीवन सादगी, निष्ठा और संघर्ष की कहानी है। उनके योगदान को देश हमेशा याद रखेगा। हमारी ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। इसमें गायब हुआ है। True to this heritage, we commit ourselves to providing a firm and purposeful sense of direction to the reform process so that this ancient land of India regains its glory and rightful place in the comity of nations. This budget represents a contribution to the successful implementation of this great national enterprise of building an India free from the fear of war, want and exploitation, an India worthy of the dreams of the founding fathers of our republic. We shall pay any price, bear any burden, make any sacrifice to realize those dreams. India is on the move again. We shall make the future happen. Sir, I have come to the end of my labor. Tonight, I feel like going to the theatre. Let the assassins be informed. I am prepared to meet their onslaughts. As the poet said, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है. Sir, I commend the budget to this August House. Let me say that we will do everything to help our industry to compete effectively. That is a commitment I own up. I, as Finance Ministry, have an obligation to see that Indian industry's hands are strengthened to compete effectively against foreign firms in our country. I think that is a commitment I own. The Prime Minister of the Republic of India. But I really also was great friends with Dr. Singh. And, you know, when you look at the work and the steps that Dr. Singh took to open up and modernize the economy and launch what I think has was really the foundations for the modern Indian economy. That's तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा, हमें रहजनों से गिरा नहीं, तेरी रहबरी का ख्याल है, तेरी रहबरी। माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, तू मेरा शौक तो देख, मेरा इंतजार देख. To the representative from the Indian Express, Mr. Manish Chibber, if he's here, please. Sir, Manish Chibber from Indian Express. Sir, the BJP and Mr. Modi's, charge against you is that you have been a weak prime minister.
So do you think, your party has a role to play in that projection of this view? Well, I do not believe that I have been a weak prime minister. That is for the historians to judge. And the BJP and its associates may say whatever they like. But if by strong prime minister you mean that you preside over the mass massacre of innocent citizens in the streets of Ahmedabad, that is the measure of strength. I do not believe that sort of strength this country needs, least of all in its. Well, what you think of me or what the country thinks of me is something which I cannot speculate. But I have, as I mentioned earlier, I have tried to serve my country with the greatest sense of dedication and commitment. I honestly believe that history will be kinder to me than the contemporary media.